Good evening friends, welcome to my YouTube channel Tanveer's Learning Zone and Consistency Builds Champions Initiative. As we know, it is 71st BPSC initiative and हम डेली 15 क्वेश्चन के करीब सॉल्व कर रहे हैं. 5 डेज अ वीक अगर हम काउंट करें तो 250 प्लस क्वेश्चंस इन अ मंथ हम सॉल्व करेंगे. और अगर सितंबर मंथ को हम अपना डेडलाइन माने तो 1000 प्लस क्वेश्चंस हमारे पास होंगे जो अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शंस होंगे. तो ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो कीजिए, डेली क्विज को सॉल्व कीजिए और जो सिलेबस दिया जाता है उसे पढ़िए. ये आपके कंपटीशन को बहुत ही बूस्ट करेगा और नॉलेज को बढ़ाएगा. तो बिना डिले किए आज का स्टार्ट करते हैं. सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. Which country has become the 10th full member of the BRICS group? The option is Sri Lanka, France, Argentina, Indonesia. You can see Indonesia is the correct answer. Indonesia has officially become the 10th full member of the BRICS group. एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया गया है ताकि आप इससे बेटर अंडरस्टैंड कर सकें और आपके तैयारी में और ये हेल्प करें. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इनॉग्रेटेड द गांधी दर्शन आर्ट गैलरी नियर राजघाट इन दिल्ली? You can see Om Birla is the correct answer. Leader Lok Sabha Speaker Om Birla inaugurated the Gandhi Darshan Art Gallery near Rajghat. Which of the following pairs is not correct in relation to Great Revolt of 1857? Some leaders are given and the place where they led. आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा इसमें गलत है. वी कैन सी बरेली. ऑप्शन दिया हुआ है तात्या टोपे बट इट शुड बी खान बहादुर खान रोहिल्ला. अदर लीडर्स एंड द सेंटर ऑफ रिवोल्ट इज आल्सो गिवन टू हेल्प यू. यू कैन रीड इट. हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिपोई म्यूटनी? वेरी इजी क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट. Lord Canning. Option number 2 is the correct answer. Lord Canning was the Governor General of India from 1857 to 1862. He was the Governor General during the 1857 revolt and Government of India Act 1858 was passed during its tenure. So 2 is the correct answer. You can consider the following information related to revolt of 1857. Here some region, leaders and the officials who suppressed that is given. Find out the odd one. We can see all the options are correct. Jhansi, Rani Lakshmibai and suppressed by Hugh Gross. Kanpur, Nana Sahib, Sir Colin Campbell. You can see Nana Sahib was the key leader in Kanpur and Sir Colin Campbell, Hugh Wheeler and General Henry Havelock led the British recapture of Kanpur. So Colin Campbell is also correct. And Delhi, you know Bahadur Shah Zafar and General John Nicholson was related. Next one. The revolt of 1857 began at? Very easy question. Meerut is the correct answer. C. The revolt began at Meerut in May 1857 when Indian sepoys rebelled against the British East India Company. The revolt began on. Actually, date is important because BPSC used to ask dates. Find out the correct answer. You can see A,
10th May is the correct answer. Begun on 10th May 1857 at Meerut. Birjis Qadir, son of Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed at the new Nawab at. Important question related to Birjis Qadir. You can see Lucknow. Birjis Qadir was proclaimed the Nawab of Lucknow after the revolt of 1857 at Lucknow. Which country has launched CR450 prototype, the world's fastest high-speed train? Very important question. Options are Japan, China, Russia and India. China is the correct answer. B. It can reach a speed of 400 km per hour. Which player scored the first century of the year 2025? 2025 वर्ष का पहला शतक किस खिलाड़ी ने बनाया? D. Kusal Pereira is the correct answer. Sri Lanka Kusal Pereira played a brilliant inning by scoring the first century of the new year against New Zealand. Which state won the Senior National Men's Handball Championship 2024 title? BPSC used to ask questions from sports, so very important. Haryana, Kerala, Bihar and Rajasthan. Kerala is the correct answer. Kerala won their first ever title by defeating Chandigarh. Who is the author of the book The First Indian War of Independence 1857-59? Statement based or book based question is asked, so important. Karl Marx is the correct answer. Karl Marx wrote the book The First Indian War of Independence 1857-59. A young soldier was hanged on 29th March 1857 for revolting single-handed and attacking his superior officers. I have not given the answer. You have to write in the comment box about this answer. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्विज. होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपने सॉल्व भी किया होगा और इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे आपने कितना स्कोर किया. डे 4 का जो टारगेट है हमारा 1858 to 1885, ये नेशनलिस्ट पीरियड है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे जो भी एक्टिविटी हुई है इसमें. और लूसेंट जीएस, एनसीईआरटी जिस्ट, आप चाहें तो घटना चक्र भी रेफर कर सकते हैं. जो डेट होगा हमारा 19 मई मंडे. सैटरडे संडे रिवीजन के लिए मैंने छोड़ा है, तो रिवाइज कीजिए जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं और जो न्यू टॉपिक दिया गया है. और अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉलो कीजिए. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.